Hello and welcome to One Cricket's Post Day Live. It is a great day for the Indian team after a dominant performance from the Indian squad. India has won the second consecutive Test match of the Border Gavaskar Trophy. It looks like India is just half a step away from the WTC final. We will talk more about this. I am Gargi Raut, and joining me live from Arun Jaitley Stadium is One Cricket's correspondent and journalist Sandeepan Banerjee. Sir, thank you for joining us. How are you and how thrilling has नीचे it निकल been जाओ to watch सीधा the ठीक session? है इधर सीधा ऐसे देखिए गार्गी फर्स्ट ऑफ ऑल या it's good to be joined the one cricket live. Yeah, I mean I'm good, and I think it has been an early finish for the Indian team. जैसे कि संडे का क्राउड आज पूरा कोटला भरा हुआ था, तो थोड़ा सा आई थिंक क्राउड के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि मैच पूरा चला नहीं, बट आई थिंक दे मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी. Like India victory, they have seen everything. They have seen India's bowling, they have seen some batting, they have seen Virat Kohli का batting देख लिया, रोहित शर्मा का batting देख लिया. तो overall जी. it's a happy happy crowd I can see. But yeah, I mean, from India's point of view, all is well. That's what we can say. Absolutely. India ke liye to this is like a cherry on top the way that they have been performing. But we all knew that Australians have trouble playing spin. But to this extent, I don't think Australia could have batted any worse because even though India struggled while batting yesterday or today, a lot of wickets fell. But I think we proved that it's not that bad of a surface to bat on. Where is Australia going wrong with all of this? I think they are not thinking clearly. If you have seen the second innings of Nagpur, Australian batters were over defensive, and Hmm. this morning they were like trying to attack everything. So they are not. They are still unable to find the fine balance how to go about their business on these pitches. Right. क्या होता है गार्गी, you have played a lot of cricket on these kind of pitches, so you also know that जब हम क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं तो हमें ऐसे विकेट पे जब हम खेलते हैं तो हमें कोचेस बोलते हैं कि प्ले स्ट्रेट, play on the Hmm. V, never sweep or Yes, sweep yes. reverse sweep. हमें that is not part of our batting culture growing up. But Yes. Australian बैट जो कल्चर है वो डिफरेंट है. वो ऐसे विकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है खेलने के लिए, और जब भी मौका मिलता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस में थोड़ा बाउंस होता है, तो इसीलिए Hmm. वहां पर स्वीप रिवर्स स्वीप इफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्लो बॉलर्स. बट ऐसे स्लो लो विकेट यहाँ पर स्वीप रिवर्स स्वीप करना बहुत ही मुश्किल है. जैसे कि स्मिथ का अगर डिसमिसल देखे, स्मिथ ज्यादा स्वीप शॉट खेलते हैं, he doesn't play sweep often, and he Yes. missed that ball by 6 inches. So that's I think that dismissal sums up the entire mindset of this Australian innings. It Yes. was it was very reckless batting. I think they were ahead in the game at the start of the day, and the way they have lost the plot completely. I think this will dent them mentally, and it will be hard for them to make a comeback in this series. But good for them that they are now getting almost a 10-day gap. Absolutely. And back when Australia had lost the Nagpur test, उसके बाद उन्होंने मतलब पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जैसे भी मीडिया या अपने मतलब दे हैड एक्सप्रेस दैट कि उनको स्पिन के अगेंस्ट अग्रेसिवली खेलना था. बट it is a bit shocking that Australia's meaning of definition of aggressive batting was sweep shots somehow. And even and I think they've got it wrong somehow because almost 6 to 7 batters sweep खेलते out हो गए, especially on a pitch like Kotla where the ball is staying so low. What is your take on that? No, that's what I have said. Okay, yeah, we predicted Australia that they will play aggressive cricket, but if aggression doesn't mean that you only play just one shot, and that was not working. And they after Yeah. दो तीन dismissal के बाद वो रुके नहीं. शायद वो ड्रेसिंग रूम से ये प्लान था कि हम स्वीप ही करेंगे या रिवर्स स्वीप ही खेलेंगे. That's what happened. Yeah, I mean it is disappointing. At the same time, I think Australia need to rethink their strategies, because on these kind of pitches you cannot survive playing like this. Hmm. आपको सीधा भी खेलना होगा, आपको अपना Yes. फीड भी यूज करना होगा. तो और पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम में शायद स्टीव स्मिथ और ग्लैबुशन ऐसे प्लेयर हैं जो वो कर सकते हैं. तो ये दो Hmm. बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करके आप ये नहीं कर सकते. तो यू नीड एज ए बैटिंग यूनिट, यू नीड टू थिंक think a lot in the next 10 days before the third test match, which will be in Indore, जहाँ पर रेड सॉइल पिचेस होते हैं, वहां पर भी टर्निंग ट्रैक होंगे. और आई थिंक
I think though that there will be some bounce over there, but still, again, if they can't keep on playing just one shot, Indian bowlers, they're too good to to. I think they will get these guys out eventually. Yes, and like you said, I agree with you. Ki Australia, mein, on their pitches they have a habit of letting the ball come to them because those Yeah. surfaces give them that bounce and that freedom to stay in their box and play whatever shots they want. But Yeah. in India, it's a bit different. You need to have a lot of footwork. You need to be quick with the judgment and all of that. But we see that Australia के second innings में अगर देखते हैं तो उन only two of our bowlers, not only just two of our bowlers, bundled up the whole team. Jadeja and Ashwin, I'm talking about. What does that say about Australia? That I think, as I have said, that they are overthinking about playing spin on this entire tour. Starting from their camp in Bangalore, when they brought someone with Ashwin lookalike who can bowl like Ashwin, and now Yes. again they are just here also. They are they thought. I mean, at Nagpur they were just they were completely outplayed by the Indians, and again coming into Delhi they were all again thinking about कि हाँ कहाँ कैसे हमें स्पिन के खिलाफ खेलना है, कैसे रन करना है. So that's the point. I think जो वो हो रहा है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं. और एज ए टीम Mhm. वो आई थिंक ये जो होता है ना, जो पूरा जो उनका मीडिया चैटर भी रहा है कि स्पिन टर्निंग ट्रैक्स एंड एवरीथिंग, तो ये एवरीथिंग हैज गॉट इनटू देयर हेड, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग क्लियरली. और आई डोंट थिंक कि अभी वो ऐसे पोजीशन में है कि अभी वो मेंटली रिकवर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस जो 10 दिन का गैप है, ये गैप उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा. जी, बिल्कुल और I think India is doing very well except there's just one worry that we need to talk about and it is that KL Rahul not being able to perform. क्या आपको लगता है कि ये उस वक़्त है वापस जाके डोमेस्टिक सर्किट में ride the wave and come back into the squad or will it be the IPL that can be the answer? What is your take on everything that is going on with KL Rahul as of now? देखिए, रोहित शर्मा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, एंड ही सेड कि वी आर नॉट एट दिस पॉइंट. आज हालांकि नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए टेस्ट टीम सिलेक्शन भी है, तो एट दिस पॉइंट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेयर नॉट डूइंग वेल. हालांकि रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था इसलिए कहा है, बट द सिलेक्टर्स विल गिव इट अ थॉट. I think Rohit Sharma was saying that the way KL has batted in difficult conditions, वो लॉर्ड्स वाले टेस्ट मैच का एग्जांपल दे रहे थे कि डैम्प विकेट में बैटिंग किया है. और लेकिन मुझे लग रहा है कि केएल राहुल नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट. हालांकि डोमेस्टिक सीजन अभी खत्म हुआ है, मे बी ईरानी ट्रॉफी का मैच में अगर केएल राहुल खेले, और मुझे लग रहा है कि एक केएल राहुल नीड्स टू बी ड्रॉप, बिकॉज Yes. हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना है. एक प्लेयर को ऐसे फेवर कर, यू कैनॉट डू दैट एक्चुअली. और समवन लाइक शुभमन गिल जो बाहर बैठे हुए हैं, वो इतने अच्छे फॉर्म में है, तो रन बनाना भी जरूरी है. अगर हमारे टॉप में ओपनर्स रन नहीं बना रहे हैं, मतलब रोहित तो रन बना रहे हैं, लेकिन एक एक तरफ से अगर रन नहीं आ रहे, दैट इज I mean that can be a weakness we can call it, and we cannot play a top side like Australia irrespective of their form with a clear weakness. So मुझे लग रहा है कि सिलेक्टर्स इस बारे में सोचेंगे, और केएल राहुल शायद मुझे लग रहा है कि जो लास्ट 2 टेस्ट मैच है शायद ड्रॉप हो सकता है, बट यू नेवर नो बिकॉज दिस टीम ट्रस्ट केएल राहुल से एबिलिटी अ लॉट. वो टीम के वाइस कैप्टन भी है, तो देखना होगा. सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आज होने वाला है. जी, बिल्कुल और लाइक यू सेड दैट केएल राहुल अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं मतलब इतना ज़्यादा बैक करना उनको आई एग्री दैट ही इज़ अ वाइस कैप्टन एंड थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इफ यू मेड समवन वाइस कैप्टन यू नीड टू पुट सम फेथ इनटू देम बट देयर आर सो मच टैलेंट वेटिंग ऑन द बेंच टू बी डिस्कवर्ड. इतना सारा पोटेंशियल है. वी हैव सरफराज खान के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है. वी हैव पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी. कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि इनकी जगह नहीं बनती टीम में आने की बिकॉज़ एवरीवन इज़ प्लेइंग वेल बट व्हेन यू लुक एट समवन लाइक केएल राहुल तो डेफिनिटली कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो बैक एंड वर्क
work some things out and then come back into the team. Meanwhile, नए players जो है उनके तरफ थोड़ा focus कर सकते हैं. We can build a few players. But when we talk about going uh, Virat Kohli, let's talk about Virat Kohli's innings today. And I think it was what I was observing was कि जिस तरीके की उन्होंने आज बैटिंग की, it is a testament of something that he has completely changed the way the Test cricket is played. The way he has brought in fitness and the way he bats, in contrast with Pujara, really shows where the game is now. No, no, absolutely, absolutely. You are right. I think you were there at the ground yesterday when Virat Kohli was Yes. playing as knock. I think he was a bit unfortunate to get out on those under those circumstances. But yeah, I mean, Virat is, as I have said in the preview show also, that Virat he's just one knock away, and he's getting the starts, getting into the grooves, but getting out unluckily, or he was facing there are some soft dismissals. So probably as I can see, he's there. And he will score a big run, a big score. He will get a big score in this Border Gavaskar Trophy. That's what I feel. So yeah, I mean विराट कोहली को लेके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारे फैंस को, क्योंकि विराट कोहली इज लुकिंग गुड. विराट कोहली और इंडिया के लिए अच्छा साइन है कि गोइंग इनटू द WTC एंड फाइनल, अगर विराट कोहली अपना ये फॉर्म जारी रखते हैं, that can be on those kind of conditions. Virat Kohli will be an asset. I mean, in any condition, Virat Kohli is an asset, but mostly on those kind of pitches, Kohli बहुत important player होने वाले हैं. So I don't think at this point we should not worry about Virat Kohli or his form. Right. And yes, Virat Kohli, मतलब अभी जिस the stage that he is at in his career, he doesn't need to prove anything to anyone. Well, I would like to go back a little bit and shine a light on what Nathan Lyon had said about the Indian batting lineup. He said that India has a long middle order. We have Akshar Patel, we have Long top order, he said. So basically, yeah, Nathan Lyon को ये question पूछा गया था कि Indian lower order has troubled Australia since the last tour also. If you can remember the Sydney Test, उसके बाद right. गैबा में, और इस टूर में भी, क्योंकि नागपुर में आपने देखा था कि इंडिया एक टाइम पे 240 पर 7 था, वहां से 400 स्कोर हुआ. कल भी 139 पर 7 से रन 262 तक गया. So Indian lower order has troubled a lot, but then Nathan Lyon said, okay, if you consider these players like Ashwin, Akshar, Jadeja, they can bat top 6 in most of the other Test teams. So don't call themselves a lower order, refer themselves as an extended top order or extended batting lineup. So yeah, and even Rohit Sharma also said about them in this press conference today, that he said that these three guys and are probably the biggest asset of this team, because क्या होता है कि ये सिर्फ खेलते नहीं है, ये अटैक करते हैं. तो जब ये बैटिंग करने आते हैं, बॉलर्स मे बी लिटिल बिट थोड़ा सा थके हुए होते हैं, उनको अगर अटैक करते हैं तो रन भी बनाते हैं ये. और जैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, I think it's probably India's biggest strength in Test cricket at home at this moment. Their depth in batting. Right. And you've just come out of the press conference. कुछ highlights बताइए कि क्या हुआ है अंदर, दोनों captains की तरफ से क्या what they have said. Well, पैट कमिंग्स को तो सारे क्वेश्चन वही स्पिन को खेलने के ऊपर ही पूछा गया था कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी देयर वे आउट. ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि they thought that Australia were leading the game at the start of the day, which I also felt कि ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर 200-250 का टारगेट दे देता तो मुश्किल हो सकता था इंडिया के लिए. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैट कमिंग्स को वही क्वेश्चन पूछा गया. इंडिया रोहित शर्मा को बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन केएल राहुल के ऊपर पूछा गया. उनके जो मिडिल ऑर्डर है, बैटिंग है, स्पिनर्स जो 3 स्पिनर्स उनके बैट कर सकते हैं, उनके ऊपर पूछा गया. देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के डीआरएस को लेके क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछा गया था आज के. डीआरएस का जो कॉल होता है, स्पेशली ऐसे विकेट पे जहां पर पैड और ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बहुत जल्दी आते हैं, बहुत फास्ट पेस मैचेस होते हैं. तो ऐसे मैचेस में डीआरएस कितना इंपॉर्टेंस रहता है, और स्पेशली सम व्हेन इज योर कीपर हु इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस.
सो बेसिकली क्या होता है, कीपर जनरली कॉल लेते हैं कि ये लगा है कि नहीं यार, हुँ। ये डीआरएस के लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो रोहित शर्मा को वही पूछा गया, रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ, वी ट्रस्ट आवर कीपर्स असेसमेंट। तो बेसिकली ज्यादा कोई नहीं बोलते, बॉलर, कैप्टन और कीपर के बीच में डिस्कस होता है कि वेदर वी शुड गो फॉर द रिव्यू और नॉट। सो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। Oh, nice insight there. But now that it is time for Aussies to win, दो मैचेस अब इंडिया जीत चुकी है. If there's a time to make a comeback for Australia, it is now. लेकिन स्टार्क बाहर है, हेजलवुड बाहर है. If they come back in the next two games, can the duo win them the match on the basis of these two players? आई थिंक स्टार्क, ग्रीन और हेजलवुड को आप इंदौर में देख सकते हैं। Hmm. I was surprised when Stark was fit over here, but he was not picked. क्योंकि हमने देखा था कि शमी ने इंडिया के लिए पहले इनिंग्स में बहुत विकेट लिए थे, तो स्टार्क ऐसे वीक कंडीशन में इफेक्टिव हो सकते थे। तो प्रोबेबली दैट वाज ए मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दे But again, you cannot, because their spinners have taken wickets, so you cannot just criticize them. But I think they should trust their strength, and that is their experience. Their experience lies in pace bowling, so they should trust those. Obviously, Nathan Lyon, Murphy और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो तो खेलेंगे, बट उनको एकोमोडेट करना होगा, ग्रीन को एकोमोडेट करना होगा उसके टीम में। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रॉब्लम अभी बॉलिंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रॉब्लम है हाउ टू काउंटर इंडियन स्पिनर्स। दैट इज ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बिगेस्ट वीकनेस इन दिस मैच। सो इफ दे कैन फाइंड अ वे आउट इन दिस 10 days, देन वी कैन सी ए कॉन्टेस्ट इन इंदौर। नहीं तो फिर इंदौर में तो विकेट वैसा ही है। तो you never know. And remember, Australia have won two important tosses in this series, and yet Yes. they are 2-0 behind after two matches. So yeah, they need some hard decisions to be. I think they need to make some hard decisions. राइट एंड देयर इज अ व्यूअर हियर सुमित वर्मा जो पूछ रहे हैं हाउ कैन ऑस्ट्रेलिया गेट डिस्क्वालिफाइड फॉर डब्ल्यूटीसी आई थिंक ही मींस कि वो हाँ, सो हार ऑस्ट्रेलिया गए का, हैं। इफ ऑस्ट्रेलिया लूज 4-0 यहाँ पर, हम्म और श्रीलंका अगर 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा दे, तो दैट विल बी यस एन इंडिया वर्सेस श्रीलंका WTC फाइनल। absolutely and thank you so much for joining us Sandeepan sir we had a great chat always a pleasure talking to you and to everyone watching please stay tuned in we will be back with more content thank you so much Thank you.